হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আশা করি so today you can see that animal tissue chapter will be completed in one shot class 11 chapter, and so today we will read in we will try to complete this chapter in 1 or 1.5 hours. So let's start our journey for completing this chapter. हम लोग अभी तक लिविंग वर्ल्ड, एनिमल टिश्यू और सेल चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज है टिश्यू चैप्टर का दिन। रोज एक बोटनी और एक जूलॉजी हम लोग कर रहे हैं सीक्वेंस वाइज। तो चलिए अभी हम शुरू करेंगे बिना किसी डैश के। चलिए, तो ये टिश्यू चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है, टिश्यू is a group of one or more types of cells. Tissue is a group of one or more types of cells having a similar origin, performing a specific function. Okay, tissue is a group of one or more types of cells performing similar function. Okay, टिश्यू क्या है? A group of one or more types of cells performing a similar types of function, having a similar, जिसका origin same हो और परफॉर्म करता है स्पेसिफिक फंक्शन, उसको टिश्यू बोला जाता है। A tissue is a group of one or more types of cells having a similar origin and perform a specific function. नेक्स्ट है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू क्या है? The structure of the cells vary according to their function. Therefore, the tissues are different and are broadly classified into four types. So there are four types of animal tissue. Animal tissue four types का होता है। Structure और जो function है वो vary करता है according to the location. So first है epithelial tissue. Epithelial tissue जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, connective tissue, muscular tissue and neural tissue. Epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and neural tissue. What is epithelial tissue? Let us dive it into detail. An epithelial tissue is a tissue composed of one or more layers of cells, thus providing a covering or lining for most part of the body. An epithelial tissue is composed of one or more layers of cells, thus provides a covering or lining for most part of the body. ये क्या करता है?
ये मेड अप ऑफ है वह एक से ज्यादा वन और मोर लेयर्स ऑफ सेल से बना है और प्रोवाइड करता है कवरिंग और लाइनिंग फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। बहुत सारे बॉडी पार्ट को कवर करने के लिए ये तैयार है। क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, तो आप ये याद रखिए, एपिथेलियल टिश्यू इज अ टिश्यू composed of one or more layers of cell, thus providing a covering or lining of the most part of the body। ठीक है। An epithelial tissue is a tissue composed of one or more layers of cells, thus provides a covering or lining most part of the body। Classification of epithelial tissue, epithelium. On the basis of number of cell layers, there are two types of epithelial tissue, that is simple epithelium and compound epithelium। Simple epithelium composed of single layers of cells and function as lining for body cavities, ducts and tubes। ठीक है। और compound epithelium consists of two or more cell layers। It has protective function as it does in our skin। उसमें बाद में आएंगे, पहले हम सिंपल एपिथेलियम टिश्यू कंप्लीट करते हैं। Composed of single layer of cell, function as lining for body cavities, ducts and tubes। On the basis of shape of structural modification of cell, there are three types of epithelium tissue: squamous epithelium, cuboidal and columnar। Squamous epithelium composed of single layer of flattened cells with irregular boundaries। So squamous epithelium composed of single layer of epithelial cells, single layer of flattened cells with irregular boundaries, composed of single layer of epithelium cell with irregular boundaries। Okay। Composed of single layer of epithelium cell, simple epithelium composed of single layer of epithelium cells, functioning as lining। হ্যাঁ, মোবাইলে কি করছো? মোবাইলে পড়ছি। Simple epithelium composed of single layer of cells, functioning of body cavities होता है, functioning as lining for body cavities, ducts and tubes। body cavity, ducts and tubes
Function for simple epithelium. Simple epithelium has three parts, that is squamous epithelium. Simple epithelium has three parts, that is squamous, cuboidal, and columnar. Composed of single layer of cells and of flattened cells with irregular boundaries. Composed of single layer of flattened cell. Squamous epithelium जो है वो composed of single layer of flattened cells with irregular boundaries. With irregular boundaries. Cuboidal epithelium composed of single layer of cube-like cells. Composed of single layer of cube-like cell. Where squamous epithelium are found? Squamous epithelium are found in walls of blood vessels and air sacs of lungs. Walls of blood vessels and air sacs of lungs. Okay, so this is the squamous epithelium. फिर से बोल रहा हूँ, squamous epithelium composed of a single layer of flattened cells with irregular boundaries found in walls of blood vessels and air sacs of lung. Air sacs of lungs में हमें ये स्क्वेमस एपिथेलियम देखने को मिलता है. अब क्यूबॉइडल एपिथेलियम composed of a single layer of cube-like cell, composed of a single layer of cube-like cells. ठीक है, क्यूब लाइक सेल जो है वो हमें क्यूबॉइडल एपिथेलियम में मिलता है. कहाँ कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, tubular parts of nephron, epithelium of proximal convoluted tubule in the kidney has microvilli. तो डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स में पाया जाता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, tubular parts of nephron and epithelium of proximal convoluted tubule, nephron in the kidney has microvilli. Now columnar epithelium composed of tall and slender cells and their nuclei are located in the at the base. Composed of tall and slender cells, columnar epithelium, and their nuclei are located at the base. Okay. Found in lining of stomach and intestine. So this is the complete simple epithelium in short version. Once again I will repeat. Simple squamous epithelium जो है इसमें composed of single layer of cells with irregular boundaries. कहाँ पाया जाता है? Walls of blood vessels में पाया जाता है और एयर सैक्स ऑफ लंग्स में. क्यूबॉइडल एपिथेलियम ये भी सिंगल लेयर ऑफ सेल है और ये क्यूब लाइक है और ये कहाँ का? डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन एंड पीसीटी, ये यहाँ पाया जाता है. और फिर है कॉलमनर जिसका न्यूक्लियाई लॉन्ग एंड स्लेंडर है और इसका न्यूक्लियाई बेस पर है. फाउंड इन लाइनिंग ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन. लाइनिंग ऑफ स्टोमक में और इंटेस्टाइन में ये पाया जाता है. कंप्लीट. अब है कॉम्पाउंड एपिथेलियम. कंसिस्ट ऑफ 2 or more cell layers
इसमें दो और दो से ज्यादा सेल लेयर्स है कॉलमनर एपिथेलियम में, दो से ज्यादा कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सेल लेयर्स हैज अ प्रोटेक्टिव फंक्शन that does to our skin. Dry surface of skin found in dry surface of skin, moist surface, buccal cavity, pharynx of the inner lining of the ducts of salivary glands and pancreatic duct. तो कॉलमनर एपिथेलियम यहाँ पाया जाता है। कहाँ? ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, ठीक है, ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, moist buccal cavity, pharynx, the inner lining of the ducts, and buccal cavity, pharynx, inner lining of the ducts, salivary glands, and pancreatic duct. Okay, so are the types of epithelium tissue. क्या मुझे रिपीट करने का जरूरत है? जो 5 लोग देख रहे हैं वो कमेंट करें, अभी अभी कमेंट करें। एक बार रिपीट करूं क्या? जो अभी देख रहे हैं वो 5 लोग कमेंट करें कि मैं एपिथेलियम टिश्यू पूरा फिर से रिपीट करूं क्या? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट शुरू करते हैं। हम लोग का सेल जंक्शन के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। सेल जंक्शन, 3 types of cell junctions. 3 types of cell junction are found in epithelium and other tissue. 3 types of cell junctions are found in epithelium and other tissue. ठीक है, 3 types दिमाग में रखिए। anchoring junction, anchoring junction, communication junction और occluding junction. Okay, एंकोरिंग जंक्शन, एडरिंग जंक्शन एंड डेस्मोसोम्स जो है, एडरिंग जंक्शन और डेस्मोसोम्स जो है, ये दोनों को बोलते हैं एंकोरिंग जंक्शन। पहले हम डेस्मोसोम्स में आएंगे। दे कंसिस्ट ऑफ थिकेंड एरिया एंड सेवरल फाइन टोनोफाइब्रिल्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईच प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू साइटोप्लाज्म of respective cells, example vagina, urinary bladder. Desmosomes जो है, they consist of thickened area and several fine tonofibrils जो है extend from each plasma membrane into cytoplasm of respective cell. साइटोप्लाज्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक्सटेंड होकर वो निकलता है और दूसरा सेल से कनेक्ट करता है। इसी को बोलते हैं हम डेस्मोसोम। एक्सटेंडिंग फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ रेस्पेक्टिव सेल्स। ये कहाँ पाया जाता है? डेस्मोसोम्स वेजाइना और यूरिनरी ब्लाडर पर। वेजाइना एंड यूरिनरी ब्लाडर। नेक्स्ट, एडरिंग जंक्शंस perform cementing to keep neighboring cells together. Perform
cementing to keep neighboring cells together. ओके, सीमेंटिंग करता है ताकि नेबरिंग सेल्स ऐसे कनेक्टेड रहे. परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर. Next is communication junction, which is also known as gap junction. Communication junction is also known as gap junction. The adjacent cells from gap junction for intracellular communication and chemical exchange. The adjacent cells फॉर्म गैप जंक्शन. जो एडजेसेंट सेल्स है वो गैप जंक्शन फॉर्म करता है फॉर इंट्रासेलुलर कम्युनिकेशन एंड केमिकल एक्सचेंज. इंट्रासेलुलर कम्युनिकेशन करने के लिए जो एडजेसेंट सेल्स है वो लोग फॉर्म्स गैप जंक्शन फॉर इंट्रासेलुलर कम्युनिकेशन करने के लिए एंड केमिकल एक्सचेंज के लिए ये ऐसा करता है. द जंक्शन प्रोबेबली डू नॉट प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट. द जंक्शन probably do not provide any फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता. गैप जंक्शन फैसिलिटेट द सेल्स to communicate with each other by connecting the cytoplasm of adjoining cells for rapid transfer of ions, small molecules and sometimes big molecules. Okay, gap junction facilitate the cells to communicate with each other by connecting the cytoplasm and adjoining cells for rapid transfer of ions, small molecules and sometimes big molecules. Last, occluding junction, which is also known as tight junction, zona occludens. At certain places, the plasma membrane of adjacent cells are tightly packed or even fused together. At certain places, the plasma membranes of adjacent cells are tightly packed and or even fused together. Example, brain में होता है. Tight junctions help to stop substance from leaking across a tissue. Tight junction stop करता है, help to stop substances from leaking across a tissue. टिश्यू में लीक ना हो जाए कोई भी सब्सटेंस, ये टाइट जंक्शन मेंटेन करता है. ओके, so I will repeat all the cell junctions once again. First is anchoring junction, adherence junction and desmosomes. Desmosomes, they consist of thickened area and several fine tonofibrils extending from each plasma membrane into cytoplasm of respective cells. Example, vagina and urinary bladder. Vagina and urinary bladder, they consist of thickened area of tonofibrils extending from each plasma membrane into cytoplasm. tonofibrils जो है वो एक्सटेंड करता है कहाँ से? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. कहाँ पर? साइटोप्लाज्म पर. ठीक है, एग्जांपल वेजाइना यूरिनरी ब्लैडर, ये है डेस्मोसोम्स. और एडेनिंग जंक्शन परफॉर्म cementing to keep the neighboring cells together. Perform cementing to keep the neighboring cells together. अब है communication junction, the adjacent cells from gap junction or intracellular junction and chemical exchange. These junctions probably do not provide any physical support. Gap junction facilitate the cells to communicate with each other by connecting the cytoplasm of the adjoining cells for rapid transfer of ions, small molecules and sometimes big molecules. Okay, for rapid transfer of ions, small molecules and sometimes big molecules. ये gap junction का काम है. Next, occluding junction or tight junction. Tight junctions, at certain places the plasma membrane of adjacent cells are tightly packed or even fused together. Example, brain. Tight junction जो है वो क्या करता है? Helps to stop substance from leaking to brain, looking to the tissue. Example is brain. Now next is glands. Okay, now we will study glands.
Types of gland on the basis of presence or absence of secretory duct, number of cells, nature of secretion. Okay. In presence or absence of secretory duct, endocrine gland. Endocrine gland and exocrine gland and heterocrine or mixed gland, ये तीनों हम पढ़ेंगे gland में. On the basis of presence or absence of secretory duct, there are three types of gland, that is endocrine, exocrine, heterocrine or mixed gland. Endocrine gland secretory duct is absent. In endocrine gland the secretory duct is absent. Endocrine gland, so there are three types of gland on the basis of presence or absence of secretory duct. There are three types of duct on the basis of presence or absence of secretory duct. Endocrine gland, exocrine and heterocrine. Heterocrine is also known as mixed gland. Endocrine gland, in endocrine gland secretory duct is absent. Secretory duct is absent. Exocrine gland secretory duct is present. Heterocrine or both exocrine and endocrine parts are, both endo and exocrine parts are present. What is endocrine gland? Discharge their secretory products directly into the blood. Example pituitary, thyroid and adrenal gland. ये जो अपना प्रोडक्ट है ये डायरेक्टली ब्लड में छोड़ देते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड. इसको लिए कोई भी डक्ट का जरूरत नहीं पड़ता, सेक्रेटरी डक्ट का. और ये पिट्यूटरी, थायराइड और एड्रिनल ग्लैंड है. और नेक्स्ट है एक्सोक्राइन ग्लैंड, दैट इज सीक्रेट म्यूकस, सलाइवा, ईयरवैक्स, ऑयल, मिल्क एंड एंजाइम. एग्जांपल सलाइवरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड. इनका डक्ट प्रेजेंट है और ये म्यूकस, सलाइवा, आपका थूक, ईयरवैक्स, ऑयल और सलाइवरी ग्लैंड दोनों को ही छोड़ता है. Heterocrine or mixed gland, both endocrine and exocrine parts are present. Example pancreas, gonads etc. Pancreas and gonads etc. Heterocrine और mixed gland. आपको अगर याद नहीं होगा तो मैं फिर से दोहरा देता हूँ. Endocrine gland secretory duct is absent. Discharge their secretory products directly into blood. Example pituitary, thyroid, adrenal gland. In exocrine gland, secretory duct are present. Secret mucus, saliva, earwax, oil, milk and enzyme. Example salivary gland, mammary gland etc. Heterocrine or mixed gland, both exocrine and endocrine parts are present. Example pancreas, gonads etc. Types of gland on the number of basis of number of cells. Now यहाँ पर आप देख सकते हैं consisting of isolated glandular cells, यूनिसेलुलर जो ग्लैंड्स हैं, यूनिसेलुलर ग्लैंड्स और मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स दोनों टाइप के होते हैं. Consisting of isolated glandular cells, example goblet cells of alimentary canal. Goblet cells जो alimentary canal में present है वो यूनिसेलुलर ग्लैंड है. consist of isolated glandular cell, goblet cells of alimentary canal. Now multicellular glands consisting of cluster of cells. Example salivary gland is known as multicellular gland consisting of cluster of cell. Now glands on the basis of nature of secretion: eccrine, acrine, metocrine, apocrine, holocrine. These are the three nature of secretion. So यहाँ पर important जो है आपका वो ये पार्ट है, ठीक है. ये पार्ट presence or absence. Endocrine gland जो है secretory duct is absent. Discharge their secretory products directly into blood. Example pituitary, thyroid and adrenal gland. Exocrine gland secret duct is present. Secret mucus, saliva, earwax, oil, milk and enzymes.
Example: salivary glands, mammary glands, etc. Heterocrine or mixed gland, both endocrine and exocrine parts are present. Example: pancreas, gonads, etc. Now, on the types of gland, on the basis of unicellular number of cell, unicellular glands is example is goblet cells of alimentary canal. Multicellular gland example is salivary gland. Nature of secretion: eccrine, acrine, metocrine, apocrine, holocrine gland. So these are the all glands. तो यहाँ पर glands का टॉपिक खत्म. अब नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू. ओके, अब कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे हम लोग. So how many types of connective tissue are there? There are three types: loose connective tissue, dense connective tissue, and specialized connective tissue. There are three types of connective tissue that are loose connective tissue, dense connective tissue, and specialized connective tissue. Okay. So what is loose connective tissue? What is loose connective tissue? In these cells, fibroblast, macrophages, mast cell, etc., and fibers are loosely present. Okay. In these cells, fibroblast, macrophages, mast cells, and fibers are loosely arranged in a semi-fluid matrix is known as loose connective tissue. Okay. Okay. So loose connective tissue in these cells, fibroblast, macrophages, mast cells and fibers are loosely arranged in a semi-fluid matrix. ये सब loosely arranged है semi-fluid matrix में, इसको ही बोला जाता है loose connective tissue. इसमें रहते हैं macrophages, macrophages मतलब जो germs forms खा लेते हैं, mast cells and fibroblast. There are two types of loose connective tissue, that is areolar tissue and adipose tissue. Areolar tissue are present beneath the skin, adipose tissue located mainly beneath the skin. Present beneath the skin, located mainly beneath the skin. So areolar tissue, what is areolar tissue? It serves as a support framework for epithelium. Support framework का काम करता है loose connective tissue का areolar tissue. और जो adipose tissue है, the cells of this tissue store fats. Excess of nutrients are converted into fats and stored in this tissue. तो अगर आप जो एक्स्ट्रा खाते हो उसका जो न्यूट्रिएंट्स है वो फैट्स में कन्वर्ट होके ये एडिपोज टिश्यू में रह जाता है. लूजली लोकेटेड मेनली बीनीथ द स्किन, स्किन के बीनीथ ही रहते हैं. और एलोडर टिश्यू क्या करता है? इट डू सपोर्ट फ्रेमवर्क ऑफ फॉर एपिथेलियम. इट सर्व्स एज अ फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम. एपिथेलियम का फ्रेमवर्क बना रहता है. तो ये था
आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू। आप यहाँ पर डायग्राम देख लीजिए अच्छे से, डायग्राम और क्या समझाऊं, फैट स्टोरेज एरिया, न्यूक्लियस क्या होता है, ये सब देख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ओके, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। In these fibers and fibroblasts are compactly packed. Fibers and fibroblasts compactly packed होते हैं, ठीक है, फाइबर्स लूज नहीं रहते हैं, ठीक है। Dense regular, there are two types of dense connective tissue. One is dense regular connective tissue, another is dense irregular connective tissue. Dense regular connective tissue show regular pattern of fibers. Regular pattern show करता है fibers का. Dense irregular connective tissue, irregular pattern of fibers, mostly collagens that are oriented differently. ठीक है। In these fibers and fibroblasts are compactly packed. Dense regular connective tissue show regular pattern of fibers, और dense irregular नाम में ही irregular pattern of fibers, mostly collagen that are oriented differently are here. Collagen fibers are present in rows between many parallel bundle of fibers. Okay, show regular patterns of fibers. Dense regular connective tissue in these fibers जो होते हैं और फाइब्रोब्लास्ट ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है, और डेंस इरेगुलर ये फिर उसके बाद डेंस फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड. Dense regular connective tissue show regular pattern of fibers, और dense irregular connective tissue show irregular pattern of fibers. अब dense regular connective टिश्यू में कोलाजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन पैरेलल बंडल्स. कोलाजन जो टिश्यू है वो कोलाजन फाइबर सब रोज में है. इन फाइब्रोब्लास्ट में मोस्टली कोलाजन द टिश्यू एग्जांपल, सॉरी, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में द टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्किन. ये भी स्किन में प्रेजेंट है, बीनीथ द स्किन नहीं, स्किन में. एग्जांपल ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू और रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, एग्जांपल टेंडन्स, अटैच्ड स्केलेटल मसल्स टू बोन्स, लिगामेंट्स अटैच वन टू अनदर. ये काम आता है आपका बोन टू बोन कनेक्शन में स्केलेटल मसल्स में. और डेंस इरेगुलर का कुछ एग्जांपल नहीं दिया एनसीईआरटी, तो यहाँ पर भी नहीं लिखा है तो मैं नहीं बताऊंगा. नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. अब ये क्या है भाई, इट इंक्लूड्स कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड. ये बोन्स एंड ब्लड को इंक्लूड करता है, ठीक है. कार्टिलेज क्या है, कार्टिलेज इंटरसेलुलर मटेरियल मैट्रिक्स इज सॉलिड एंड प्लायबल. सॉलिड भी है पर मोटा भी है, फ्लेक्सिबल है, ड्यू टू कॉन्ड्रिट सॉल्स एंड रेसिस्ट कंप्रेशन. ये क्यों प्लायबल है, क्योंकि इसमें कॉन्ड्रिटिन सॉल्ट्स है और रेसिस्ट कंप्रेशन कर सकता है. अब बोन क्या है, हार्ड एंड नॉन प्लायबल. ये इसको आप मोड़ नहीं सकते, मतलब फ्लेक्सिबल नहीं है, मतलब आप बोन को ऐसे ऐसे बोन को आप दबा नहीं सकते. ये बोन तो बहुत सारे बोन मिलके इसलिए ऐसा हो रहा है मूवमेंट्स, लेकिन आप अगर इसको कंसिडर करें जॉइंट से तो ये आप हार्ड एंड प्लायबल है. जैसे कि ईयर है, ये कार्टिलेज का मेड है, देखिए मैं किसी कितना ही मोड़ रहा हूँ, ये रेसिस्ट, ये कंप्रेशन को रेसिस्ट कर पा रहा है, देखिए देखिए, ठीक है. Cartilage cells are enclosed in small cavities within the matrix secreted by them. Bone cells are seen in spaces called lacunae. Bone cell जो है वो lacunae में दिखता है. Most of the cartilage in vertebrates embryos, cartilage जो vertebrate embryos में है वो replaced by bones in adult. जब हम लोग adult बनते हैं तो हम लोग का bone में बदल जाता है वो cartilage. Next, bone जो है function, it provides structural framework to the body, support and प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. ये सॉफ्टर टिश्यूज और ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है. नेक्स्ट, कार्टिलेज इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ नोज, आउटर एयर, जॉइंट्स इन द वर्टेब्रल लिम्स एंड हैंड्स इन एडल्ट. और limb bones are weighted function, takes parts in locomotion movements. Blood cells are produced in bone marrow. ब्लड सेल्स जो है वो बोन मैरो में प्रोड्यूस्ड होता है. तो ये था पूरा कनेक्टिव टिश्यू, हम लोग कंप्लीट कर डाले. कितने मिनट में, टोटल 40 मिनट्स में हम लोग पढ़ लिए एपिथेलियम टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू. अब पर मसल टिश्यू बचा है, नर्वस टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम. तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. तो अभी मैं, टाइम है इसलिए बोल रहा हूँ, कनेक्टिव टिश्यू फिर से
एक शॉर्ट जस्ट 5 मिनट में मैं इसको रिवाइज करा दूंगा। चलिए, लूज कनेक्टिव टिश्यू हम पढ़े थे। लूज कनेक्टिव टिश्यू इन दिस सेल्स फाइब्रोब्लास्ट एंड मैक्रोफेजेस एंड फाइबर्स आर loosely arranged in a semi-fluid matrix. How many types of loose connective tissue are there? Areolar tissue and adipose tissue. Areolar tissue present beneath the skin. Adipose tissue located mainly beneath the skin. Areolar tissue, it serves as a support framework for epithelium. Adipose tissue, the cells of this tissue store fats. Excess of nutrients are converted into fats and stored in this tissue. Dense connective tissue in these fibers and fibroblasts are compactly packed. Dense regular connective tissue show regular pattern of fibers. Collagen fibers are present in rows in many parallel bundles of fibers. Dense irregular connective tissue, irregular parts of fibers that are oriented differently. It has fibroblasts and many collagen fibers. Example of dense regular connective tissue are attached skeletal muscles to bones, ligaments attach one bone to another. Dense irregular connective tissue, this tissue is present in the skin. Now specialized connective tissue, it includes cartilage, bones and blood. Cartilage intercellular matrix is solid and pliable. Intercellular matrix is solid and pliable, and due to conducting salts it is pliable and resist compression, and bone is hard and non-pliable matrix rich in calcium salts and collagen which are given bone knit strength. Cartilage cells are enclosed in small cavities within the matrix secreted by them. Bone cells are seen in space called lacunae. Cartilage, most of the cartilage in vertebrates are replaced by bones in adult. Function of bone, it provides structural framework of the body, support and provides softer tissues and organs. Cartilage is present in the tip of nose, outer joints in vertebral column, limbs and hands in adult. Limb bones are weight-bearing function, take parts in locomotion and movement. Blood cells are produced in bone marrow. तो ये खत्म हो गया कनेक्टिव टिश्यू। चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मसल टिश्यू। ठीक है, मसल टिश्यू। मसल टिश्यू शुरू करने से पहले मैं आपको 5 मिनट का ब्रेक गिफ्ट करता हूँ। नहीं, 5 मिनट अभी ब्रेक नहीं, अभी मसल टिश्यू पढ़ते हैं फिर देखते हैं। चलिए, ईच मसल is made up of many long cylindrical fibers arranged in parallel arrays. Each muscle is made up of many long cylindrical fibers arranged in parallel arrays. These fibers are composed of numerous fine fibrils called myofibrils. These fibers are composed of numerous fine fibrils called myofibrils. Muscle fibers जो होते हैं ये वो अरेंज होते हैं myofibrils में. Muscle fibers contract, shorten in response to stimulus. अगर मसल फाइबर को ये ऐसे जो पैरेलल एरेज में है, आप यहाँ पर मसल देख सकते हैं, जैसे ही अगर कॉन्ट्रैक्शन होता है कुछ रिस्पॉन्स पर तो ये शॉर्टेन होता है एंड रिलैक्स मतलब ये लेंदेन होता है, रिटर्न टू देयर अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट इन अ कोऑर्डिनेटेड फैशन. कोऑर्डिनेटेड फैशन में ये होता है. That action moves the body to adjust the changes in the environment and to maintain the position of the various parts of the body. ये maintain करता है various part according to the situation of the body का. Muscle in general, muscle plays an active role in all the movements of the body. Muscle जो है वो हमारा body का हर active role में participate करता है. मसल आर ऑफ 3 टाइप्स. मसल टिश्यू भी 3 टाइप्स का है, एक है स्केलेटल, एक है स्मूथ और एक कार्डियक. स्केलेटल मसल जो है, मसल इज क्लोजली अटैच टू द स्केलेटल बोन्स, ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है. इन अ टाइप ऑफ मसल सच एज बाइसेप्स, striated stripped skeletal muscle fibers are bundled together in a parallel fashion. जो striated skeletal muscles है वो बंडल टुगेदर होता है, स्ट्रिप्ड होता है और पैरेलल फैशन में आप देख सकते हो इसको.
In a typical muscle such as the bicep, okay, a sheet of tough connective tissue encloses the severe bundle of several bundle of muscle fibers. Sheet of tough connective tissue enclose करता है several bundles of muscle fibers को, ठीक है। शीट ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू ऐसा रहता है और मसल ऐसे पैरेलली अरेंज्ड होता है स्केलेटली मसल्स के। स्मूथ मसल क्या है? द स्मूथ मसल्स fibers tapers at the both ends fusiform and do not show striation। स्मूथ मसल नाम से ही पता चल रहा है ये स्टाइरेशन शो नहीं करता। सेल जंक्शन होल्ड देम टुगेदर अंडर बंडल्ड इन कनेक्टिव टिश्यू शीट। The walls of the internal organs such as the blood vessels and stomach and intestine, this type of muscle tissue, वॉल जो है, इनर वॉल जो है, इस टाइप ऑफ स्मूथ मसल से ही बना है, ठीक है। ब्लड वेसल्स जो है, जितना भी हमारा वेन्स है, उसका जो वॉल है, इनर वॉल, सपोज आप ये वेन है, ये से ब्लड जा रहा है, ये जो वॉल है, ये यहाँ से जो जा रहा है, ये सब हमारा स्मूथ मसल से बना है। ऑब्वियसली स्टाइलेटेड नहीं होगा, ठीक है। स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंटरी, ये इनवॉलेंटरी है, एज देयर फंक्शन कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑल्टर्ड। ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते स्मूथ मसल। हम लोग इस मसल को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, पर वो मसल को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कार्डियक मसल, ओके सॉरी, नेक्स्ट है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल इज अ कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन हार्ट। कार्डियक से ही पता चल रहा है ये ओनली हार्ट में प्रेजेंट होगा। सेल जंक्शन फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल सेल्स एंड मेक देम स्टिक टुगेदर। सेल जंक्शन को इसको फ्यूज करके रखता है। Communication junctions at some fusion points allows the cell to contract as unit. When one cell receives the signal, its neighbor are also stimulated to contract। आपको पता होगा कि कार्डियक मसल हार्ट में होगा और हार्ट जो है वो ऐसे 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 पंप करता है, तो एक नेबरिंग सेल्स को वो सिग्नल मिलने पर वो उसको कम्युनिकेट करता है, तो ऐसा होता है कार्डियक मसल, ठीक है। तो ये था पूरा मसल टिश्यू। मैं एक बार इसको फिर से दोहरा दूंगा सिर्फ 2 मिनट में। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डैश के। ईच मसल इज मेड अप ऑफ मेनी लॉन्ग सिलिंड्रिकल मसल टिश्यू। Each muscle is made up of many long cylindrical fibers arranged in parallel arrays. These fibers are composed of numerous fine fibrils. Muscle tissue contract, shorten in response to stimulation, then relax, lengthen, and return to their uncontracted state in a coordinated fashion. Their action moves the body to adjust to the changes in the environment and to maintain the position of the various parts of the body. In general, muscle plays an active role in all the movement of the body. Muscles are of three types: skeletal, smooth, and cardiac. Skeletal muscles tissue is closely attached to skeletal bones. In a typical muscle such as the biceps, striated skeletal muscle fibers are bundled together in a parallel fashion. A sheet of tough connective tissue encloses the several bundles of muscle fiber. Smooth muscle fibers, the tapers at the both ends, fusiform, do not show striation. Cell junctions hold them together and they are bundled together in a connective tissue sheet. The walls of the internal organs, such as the blood vessels, stomach, and intestine, contrast this type of muscle tissue. Smooth muscles are involuntary as their functioning cannot be directly controlled. Cardiac muscle tissue is a contractile tissue present only in the heart. Cell junction fuse the plasma membranes of the cardiac muscle cells and make them stick together. Communication junction, intercalated disc, and some point fusion allow the cells to contract as a unit. When one cell receives a signal to contract, its neighbors are also stimulated to contract। ये था मसल टिश्यू का पूरा हिस्ट्री। बस अब है नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू इज बेसिकली made up of neurons, unit of neural system। Neurons are excitable cells, ये excitable cells होता है, and carry impulses responsible for control and coordination of the body। सभी को पता है ब्रेन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है। न्यूरॉन्स आर प्रोटेक्टेड एंड सपोर्टेड बाय न्यूरोलॉजिकल सेल्स, न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरॉन्स आर प्रोटेक्टेड एंड सपोर्टेड बाय न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरोग्लियल सेल्स मेक्स अप मोर देन वन हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू। न्यूरोग्लियल सेल्स मेकअप करता है मोर देन वन हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू। बस यही था नर्वस टिश्यू। Neurons are protected, आज फिर से बोल देना हूँ, made up of neurons। Neurons are excitable cells and carry impulses responsible for control and coordination of the body। Neurons are protected and supported by neuroglial cells। Neuroglial cells make up more than one half of the volume of the neural tissue। अब लास्ट जो है वो है organ and organ system।
The complexity in organ and organ system displays certain discernible trend. The change in evolutionary trend. Morphology refers to the study of form or externally visible feature. In case of plants or microbes, the term morphology precisely means only this. In case of animals, this refers to the external appearance of the organs or parts of the body. The word anatomy conventionally is used for the study of morphology of internal organs in the animals. तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, appearance of organ और parts of the body में ही बोला है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बैठेगा। तो यही था एनिमल टिश्यू, और जो बचा है वो कॉकरोच, वो अलग से वीडियो होगा उसका। ठीक है, कॉकरोच का अलग से वीडियो होगा। और बाकी मिलते हैं कल एक बोटनी के चैप्टर से, और एनिमल टिश्यू एक छोटा चैप्टर ही था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए चैनल को। ठीक है, फिर बाय, मिलते हैं दोबारा कल।